guys, this is Sakshi and welcome to my first vlog. So जैसे कि ये पहला vlog है, so मैं थोड़ा सा introduction दे देती हूँ पहले अपना. So मेरा नाम साक्षी है and I'm from Delhi, India. And right now I'm working as a human resource professional at Boston Consulting Group in Paris. And I just wanted to share my journey and make informative videos for everyone who is planning to study abroad, especially in France. And thus, let's begin. सो पेरिस आना मेरा सपना था. सबका होता है कुछ ना कुछ, सभी कुछ ड्रीम डेस्टिनेशंस होती हैं. मेरे लिए वो पेरिस था. जब से मैं 10 साल की थी, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच इन माय स्कूल, आई जस्ट न्यू दैट दिस इज़ माय ड्रीम डेस्टिनेशन एंड मुझे पेरिस जाना है. बट सबकी तरह मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कैसे जाना है. मुझे पढ़ने जाना है. प्रॉबेबली 10 साल के बच्चे को पता भी नहीं होता कि आगे क्या करना है, बैचलर्स किस में करनी है, मास्टर्स किस में करनी है, हाउ टू मूव अब्रॉड. बस मुझे ये पता था कि मुझे पेरिस जाना है. सो अब मुझे नहीं पता था कि मैं एजुकेशन के लिए जाऊँ, मैं जॉब के लिए जाऊँ. आई हैड नो क्लू. बट आई वॉज श्योर ऑफ दिस थिंग कि मुझे सिर्फ घूमने के लिए पेरिस नहीं जाना. आई वॉन्ट टू स्टे इन फ्रांस. आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द लाइफ, द कल्चर, एवरीथिंग. ठीक है. सो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेजेस थी एंड देन आई जस्ट थॉट कि ओके वील फिगर आउट वंस वी जस्ट आर डन विद ग्रेजुएशन. पहले ये भी मुझे था कि मैं ग्रेजुएशन के लिए पेरिस जाऊँ, बट देन इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट कि ग्रेजुएशन इंडिया से करना बेस्ट है. दैट्स माई पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स. बट देन आई फिगर्ड आउट कि हाँ ठीक है, ग्रेजुएशन इंडिया से करना चाहिए एंड देन वील सी कि मेरे को जॉब के लिए मूव करना चाहिए या फिर शुड आई मूव फॉर मास्टर्स. सो फाइनली मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी. मैंने ह्यूमैनिटीज़ से करी थी. आई डिड माई बैचलर्स इन बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड देन वॉज द टाइम जब मेरे को चूज़ करना था कि शुड आई गो फॉर UPSC. सो आई हैड 2 options in mind. First, to go for UPSC and then go for IFS, Indian Foreign Services, and then somehow get related to, France, etc. And the other option was move for masters to Paris. So I chose the second one because of course first वाला बहुत लंबा procedure था and I just wanted to make it quick through life. And so I chose to do my masters in Paris. And I mean that's like very common, right? Everyone moving abroad to do masters. So जब मैंने decide किया कि मुझे masters के लिए बाहर जाना है, तब भी मेरे माइंड में थोड़ा सा डाउट था कि शुड आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा. क्या वो बेटर ऑप्शंस रहेंगे अगर मुझे परमानेंटली बाहर रहना है, या फिर शुड आई मूव टू फ्रांस जहाँ पे परमानेंट रेजिडेंटशिप के ऑप्शंस बहुत बहुत स्लीक हो जाते हैं एंड देन इट गेट्स डिफिकल्ट. यूरोप में इट्स लाइक सुपर डिफिकल्ट टू गेट सिटीजनशिप एंड एवरीथिंग. इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स कंपैरेटिवली ईजियर इन कैनेडा. सो वो वाला डाउट भी था मेरे दिमाग में, बट देन माई हार्ट सेड इट हैज़ टू बी फ्रांस. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड I finalized the country first that okay, it has to be France. I cannot stay anywhere else. अगर मैं चली भी जाऊँगी just to figure out my life later, but then मैं खुश नहीं रहती. That is something I have realized over time. So yes, so first of all it comes कि मैंने अपना business school कैसे final किया. So I've done my masters from ESEG. I'll just write it here. So it's ESEG School of Management in Paris. So सबसे पहले मैंने एजुकेशनल फेयर्स अटेंड करने स्टार्ट करे. दैट हैपेंड इन द ईयर 2019 एंड 2019 अक्टूबर नवंबर में आई अटेंडेड अ लॉट ऑफ एजुकेशनल फेयर्स हैपनिंग इन दिल्ली, जहाँ पे फ्रेंच बिजनेस स्कूल्स आ रहे थे टू अंडरस्टैंड कि कैसा करिकुलम है, व्हाट ऑल डिग्रीज आर अवेलेबल, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. Right, so there was this one fair which happens every year by the French government. That's the Choose France tour. So ये वाला जो fair होता है ना, इसमें सिर्फ French schools आते हैं, public universities आती हैं, private universities आती हैं. There are a lot of people who come and they are the representatives who help in your admission process throughout. So I went to this tour in I guess October 2019. And so it was this Choose France tour where I met Miss Bridgeween, the admission coordinator from ESEG, and she went through my CV. She suggested me courses which I could do, and when she went through my CV, she was like, okay, you are getting into this business school. This has to be your place. So I trusted her, and along with that, I applied to one more business school. That's EdHec. That's in Lille. So I had 2 options and I applied to EdHec, but then उसकी कुछ requirements change हो गई थी. They required 4 years bachelor's instead of 3 years bachelor's later on, so I couldn't make it there. वो भी one of my targeted school था, but then I chose ESEG and
I'm pretty happy that I chose this school. So इसके दो campus थे, एक La Défense में था, which is in Paris, and the other one was in Lille, which is basically the student city of France. So दो options थे, दोनों बहुत अच्छे थे, but then Paris आना था, so had to choose La Défense. So this all happened between 2019 October November से लेके my admission was finalized in like December 2019. So January तक I paid the fees, I reserved my seat, I did everything. So this was January 2020, and then COVID happened in March 2020, and काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मंथ्स थे सबके लिए, वो सबकी फैमिलीज़ में इतना कुछ हो रहा था, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग अराउंड. सो मेरा जो कोर्स था वो स्टार्ट होना था अगस्त 2020 से. सो आई वाज लाइक ठीक है, देखते हैं. अभी मार्च अप्रैल बहुत ज़्यादा हो गया था तब तक कोविड, बट देन द फर्स्ट वेव वाज सेटलिंग अराउंड इन अगस्त सितंबर, बट स्टिल I just thought about it, and then उस टाइम पे वीज़ा प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रहा था, and we didn't know if we'll be able to travel on time. So हमने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया, सोचा, and I took a few classes online. तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरा वीज़ा कब आएगा, when will I be able to travel to France and continue the course in person. So I deferred my admission in September 2020 से लेके मैंने उसको September 2021 पे डाल दिया. सो वो एक साल था when actually I was like so stressed कि मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ड्रॉप ईयर लिया, जब मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं ड्रॉप करूँगी एक साल या कुछ भी. बट थैंकफुली आई डिड सम शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स विद वेरी गुड कंपनीज. सो वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. सो अगर मैंने वो साल ड्रॉप किया, सो आई एम श्योर आई गॉट सम बेनिफिट्स हियर आफ्टर वर्किंग इन दोज कंपनीज. सो आई एम लाइक सुपर हैप्पी एंड सुपर थैंकफुल टू गॉड कि मेरे को वो चांस मिला. Okay, so I came to Paris finally in August 2021, and my course had to start in September 2021. So I made it to Paris. I came here. I was like super happy, and everything was so new, and my life completely changed from Delhi to Paris. So before sharing about my life in Paris here, let me share with you the admission process which I had to undergo to ESEG. So basically सबसे पहले after meeting Miss Bridgewin in the Choose France tour, I applied online. I submitted the application. The application fee costs around like 80 to 100 euros. It's changing every time. I guess it's 100 right now. I'm not pretty sure, but yes, that comes to around 7 to 8k INR. So उसके बाद क्या होता है कि आपका CV सबमिट होता है, and then you have to submit a few SOPs and everything. You have to write your motivations कि आपको इस business school में क्यों जाना है, आपको फ्रांस क्यों आना है, why this degree and everything. So I shortlisted the course of Masters in International Business. ये एक Generalized Masters course था, and since I was from humanities background, so I wanted a generalized course ताकि मेरे को सारे domains की management में थोड़ी सी information हो जाए. ठीक है. So पहला process तो यही था, submitted the application, submitted CV and everything. The second stage of the process was an interview. So my interview, gladly, that was also with Miss Bridgewin only, क्योंकि वो एशिया के admissions handle करते हैं. And I had a very good interview and everything. It went super smooth for me, touch wood, and it has been really good. So, and of course, then after a month or so, I got my offer letter in hand. So yes, it was finalized that I'm going to ESEG, and I was like super happy about it. So yes, that's how the process went for the admissions. And किसी में आपको GMAT के scores submit करने होते हैं जब specialized masters करते हो तो. But thankfully यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. मुझे IELTS भी नहीं देना पड़ा because my university bachelor's degree was in English, so मेरे को IELTS भी नहीं submit करना पड़ा. However, I think I submitted one letter from Delhi University stating that my the medium of my bachelor's was English, so that sufficed and that was okay. And नहीं, आपको French के कोई certificate नहीं चाहिए because this course in ESEG was in English, but somehow I had DELF B2 in French. I completed that in March 2019, I guess. So मेरे पास वो वाला certificate था which I submitted just to make my profile a little stronger. So yes, these were the documentations mainly required to be submitted at your business school. So अब बात आती है कि how did I choose and how was I so sure about this course. So I would recommend 3 things जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब भी आप बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए before choosing your course, right? So the first thing is, this is especially for Europe and for France,
कि आपको एक्रेडिशंस देखनी चाहिए कि आपके कोर्स के पास कौन से सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी हैं. सो बेसिकली फ्रांस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स which are EQUI, EQUIS, AMBA, AAMBA, and the third one is AA CSB. So I'll just list them down here. And I mean, ये वाले जो crowns होते हैं, if your course has all these 3 crowns, they are very good. And अगर 2 भी हैं तो भी it's not bad. So I would suggest कि ऐसे courses के लिए जाओ जिनके पास ये accreditations होती हैं, because these are internationally recognized. And अगर आपने decide कर लिया कि ठीक है आपने एक course कर लिया, एक country से कर लिया, and then you want to move somewhere else, आपको उस country में नहीं रहना, या फिर कहीं भी आपको you have to move towards different markets. So these are the accreditations internationally accepted. तो आपकी business school की value and आपके course की value पता चलती है उससे. So these are very important. Second thing is keep the linguistic requirements in mind. So जो courses होते हैं ना वो basically English में होते हैं. आपको हमेशा ये कहा जाएगा जब आप educational fairs attend करोगे, the course is in English, don't worry, you can go even if you don't know the local language of the country. But मैं अपने personal experience से बता रही हूँ कि इन बातों पे ना विश्वास मत किया करो. सो बेसिकली अगर तुम फ्रांस आ रहे हो तुम्हें फ्रेंच आनी चाहिए, अगर तुम जर्मनी जा रहे हो तुम्हें जर्मन आनी चाहिए, एंड वहाँ जाके सीख लोगे ऑफ कोर्स. बट देन एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में ना इतनी चीज़ें होती हैं हैंडल करने के लिए, सब कुछ इतना न्यू होता है कि आसान नहीं होता बाहर जाके लैंग्वेज सीखना. सो कम से कम 1 साल पहले डिसाइड करो कि तुम्हें जाना है, कौन सी कंट्री जाना है, एंड देन स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज, बिकॉज 1 year इज ऑल्सो वे टू लेस टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, अ फॉरेन लैंग्वेज. बट बहुत ज़रूरी है. तुम्हारा कोर्स इंग्लिश में है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा. बट देन उसके बाद जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है जॉब हंटिंग का, इंटर्नशिप हंटिंग का, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड अगर तुम्हें भाषा नहीं आती ना किसी जगह की तो बहुत ही मुश्किल है. मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर तो चलो तुम अपने दोस्तों से हैंडल करवा लोगे, बट देन जॉब के इंटरव्यू के लिए कोई दोस्त नहीं जाएगा. एंड देन ऑब्वियसली एवरी कंपनी वुड प्रायोरिटाइज समवन हु इज़ नोइंग द लोकल लैंग्वेज, बिकॉज कल्चरली फिट वगैरह सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है अगर तुम्हें लैंग्वेज आती है तो. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई पर्सनली नो पीपल जिनकी जॉब इस वजह से नहीं लग पा रही है बिकॉज उनको लैंग्वेज नहीं आती है. सो फ्रांस में वो वाली चीज़ है, आप लोगों ने सुना भी होगा काफ़ी जगहों से कि फ्रेंच लोग आर नॉट वेरी एक्सेप्टेबल टू द वंस हु स्पीक जस्ट इंग्लिश. सो कीप दैट इन माइंड. एंड सो तीसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगी कि सबको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग द कोर्स इज़ कि आपके कोर्स का कंटेंट क्या है और आपके इलेक्टिव्स क्या क्या अवेलेबल हैं. सो हर कोर्स में एक तो आपका जनरलाइज मास्टर्स में यू हैव लाइक पर्टिकुलर कोर्सेज जो कि बहुत इंटेंसिवली पढ़ाए जाते हैं, एंड देन यूजुअली सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में यू हैव अ फ्यू इलेक्टिव कोर्सेज. ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कि जो आपके इलेक्टिव कोर्सेज हैं वो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हो. सो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ. सो आई वॉन्टेड टू गो इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज. आई वॉज लाइक सुपर श्योर, आई हैड सम एक्सपीरियंस ऑन दैट एज वेल. सो आई वॉज सुपर श्योर कि मेरे को ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना है. सो मैंने वो वाली चीज़ चूज़ करी जिसका ह्यूमन रिसोर्सेज एक मेन सब्जेक्ट हो. बट देन आई चूज इलेक्टिव्स. आई हैड एन ऑप्शन टू चूज इलेक्टिव्स जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के भी सब्जेक्ट्स थे. बट ऑल्सो अगर ह्यूमन रिसोर्स लाइन मेरे लिए वर्कआउट नहीं करी होती तो आई वुड हैव गॉन टू मार्केटिंग या फिर आई वुड हैव गॉन टू कंसल्टिंग और एनी अदर थिंग. सो वो वाले कोर्सेज भी थे, चाहे वो थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में पढ़ाए गए मुझे, बट देन दोज कोर्सेज वर अ पार्ट ऑफ माई मेन कोर्स. सो वो वाली चीज़ ध्यान रखना. इट जस्ट ओपन्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एंड यू आर नॉट स्टिकिंग टू जस्ट वन डोमेन इवन इफ दैट डजंट वर्क आउट फॉर यू, बिकॉज तुम अपनी कंट्री छोड़ के आ रहे हो, तुम एकदम नई मार्केट में आ रहे हो. आई वॉज स्टेपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूरोपियन मार्केट. सो पॉसिबिलिटी थी कहीं ना कहीं कि मेरे पास यूरोपियन मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे लिए जॉब ढूंढना इतना ईजी नहीं होता. So yes, I think that is something that you should keep in mind. So I think कि जो मैंने इस वीडियो में चीज़ें बताई हैं, how to choose your business school and then what are the admission process and like what things you should keep in mind before finalizing your course, I think ये आपके लिए helpful होंगी. And subscribe to my channel and I'll be sharing more videos about Schengen visa, about student visa for Europe and a lot of things about part-time jobs, about getting the full-time jobs. And since I'm into human resources, I'll be sharing very insightful topics for your CV and for your interviews, etc. as well. So I hope you liked it and please drop in your comments and any feedback is welcome. Thank you so much and bye-bye. Take care.